हेलो। हे, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है साफ से? कैन यू हियर मी क्लियरली? यू शुड बी एबल टू सी मी वेरी क्विकली। बट या, आज हम लोग किसी बात का करने वाले हैं, लिगैंड्स, नॉमेनक्लेचर या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आफ्टर बिट ऑफ अ स्मॉल ब्रेक, दशहरा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? होल्ड ऑन, दिस व्हाट वी गोइंग टू स्टार्ट विद राइट अवे। डेंटिसिटी एंड ऑल दीस आइडियाज। एक सेकंड। या, व्हाट्स अप? यू शुड सी मी राइट अबाउट नाउ। क्या चल रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Hey Sandeep, Raghav, Ajay, Meena, what's happening? Weren't you in the JE channel? It's cool. You're here as well, huh? Ankit, are you around? Hey, 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 hey. Shall we get started? Yeah. Theory यहाँ पे काफी straightforward है and can get you easy marks if it's tested in NEET. The whole idea of what kind of ligands basically classification क्या होता है, ठीक है? We'll look at denticity, then we'll look at charge, cationic, negative या फिर न्यूट्रल, एंड उसके नाम क्या होते हैं. द मेजर पार्ट ऑफ दिस सेशन, द सेकंड हाफ, इज गोइंग टू बी अबाउट द नेमिंग पार्ट, जिसमें ऑलमोस्ट हमेशा हर पेपर में इस पे सवाल आते हैं, या एटलीस्ट सो इफ यू, इट डिपेंड्स ऑन व्हिच, क्या बोलते हैं उसको, I was going to talk about which shift you get, and I just realized we're on the NEET channel. Yeah, so this is definitely going to come. Yeah, so please do this properly. Anita, what's up? Teerthraj, Yashodhan, Raghav, a lot of people. Ranjanaya, hey, hello, good evening. Awaaz saaf aa rahi hai. Everybody can hear me and see me, right? Yeah. So the classification of ligands based on denticity. That's what we're going to do. What is denticity? Denticity is basically the number of electron pairs that the Lewis base or the ligand gives. अब ये Lewis base क्या बोला है? Remember, मैंने अब जब शुरू किया था, maybe you've studied here, maybe you've read it in NCERT, but एक ligand is a species that is a Lewis base that has electrons to give. ठीक है? अब वो उसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या फिर चार्ज नहीं भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. ठीक है? कूल? या? व्हाट्स अप? ऑलराइट. हे देवांशी, अनीता, या आई रिमेंबर. ओके, ग्रेट. हेलो. आवाज ठीक से आ रही है? विच क्लास चैप्टर? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, संदीप. दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम तो पढ़ ले यार. This is the second one in the series. Maybe that's why you don't remember. I will link them all together so that you'll be able to see them. ठीक है? So what is denticity? Number of donations accepted. Let's just call it number of electrons. That's why I don't like the word donation. That's weird. Donation कहाँ दे रहे हैं हम लोग? Electron pairs, right? Accepted by a central atom from a particular ligand is known as the denticity of the ligand. So broadly we have monodentate, bidentate और also didentate. एक, दो या फिर दो से ज्यादा. ठीक है? That's what we'll classify it as. This is very direct. Okay. The first one is monodentate ligands. What are examples? यहाँ पे पानी यानी कि aqua. That's what it's called. We'll look at the names in second half session. Maybe around 15-20 minutes we'll get to all of this. Okay. NO, which is NO क्या होता है? किसी को मालूम है? नाम मत बताओ. CO is, I know NO is nitric oxide. I know CO is carbon monoxide. Cl minus is chloride, but इसका एक स्पेशल नाम होता है जब आप डालते हो इसको इसके अंदर. Okay, inside the complex. खैर, we'll look at that. These are Lewis bases that donate one पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक मतलब मोनोडेंटेट, सिंपल इनफ. बाई या फिर डाइडेंटेट मतलब दो पेयर. दो पेयर कहां से आएंगे? वेल, इट कैन कम फ्रॉम द सेम एटम और मल्टीपल एटम्स. मोस्टली इट हैपेंस दैट इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल एटम्स. एक सिंगल एटम से निकलने के चांसेस थोड़े कम है. सो लुक एट दिस. इफ देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स लाइक इन EN इज सिंपल एथिलीन डाइअमीन. एथिलीन क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो है, C2H2 और दो बॉन्ड्स. ओके, एंड दिस यहाँ पे अमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं. Now, this amine group में you can, if you draw the structure properly, अगर आप Lewis dot structure बनाएंगे etc., you will see that there is one lone pair over here, another lone pair over here. तो ये दोनों हैं जो अटैक करते हैं on the metal. Okay, hence this is a bidentate ligand. समझ में आ रहा है? नाइट्रो क्लोरिडो. थैंक यू रजन्या, बिल्कुल सही. आदिल जी, बहुत समय बाद आप दिख रहे हैं. यस 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 आदिल जी, मैं जेई पे ही पढ़ाता हूँ. नीट इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जून. या, I am a JE guy, but that's cool that you've seen that as well. आवाज ठीक से आ रही है ना? Everything's good. Oh, that's interesting. Glycinate ion. What is glycinate, Rajput जी? थोड़ा बताइए मुझे. The next one here is oxalate. Oxalate. इसमें कहाँ है? इसमें लोन पेयर है कि नेगेटिव चार्ज है? Look at this, right? CO, O minus और एक और C, एक और O और O minus. इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास तो दो और लोन पेयर होंगे. Is that correct? 4, 5, 6, 7, 8. हाँ, है ना? So it definitely has enough lone pairs. There's no doubt whatsoever कि ऑक्सीजन के पास है lone pair. ठीक है? So at least एक lone pair है that it will happily give away to the metal ion, and similarly another one. So this is a bidentate ligand. Easy enough to understand. First principle से चीजें करिए. Please bug मत करिए. That's what I'm trying to tell you.
A polydentate ligand is a Lewis base that donates more than 2 pairs of electrons. More than 2 pairs. अगर दो से ज्यादा हुए साइट्स जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लाइक दिस राइट हियर, लुक एट दिस, कितने ढेर सारे हैं यहाँ पे. डाई ईएन, मतलब कि ईएन बट उसके दो दो पार्ट्स. You will see that sometimes you will use the word bis and not die. ये सब हम लोग करेंगे, don't worry. You will be like die नहीं bis होता है. I know, it's okay, कर लेंगे, don't worry. ठीक है, that is a different thing altogether. Okay, here you've got 1 2 3 and oh, okay, hold on. एक minute. This is interesting. This is different from what I thought was. This is tridentate, not 4. मैं जो bis बोल रहा था, bis en, that will have 4. Okay, tetradentate होगा. ये tridentate है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 नाइट्रोजन एटम्स है. एक और है, हाँ देखो, ट्राई ईएन है. ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी. ओके, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा स्टफ टू शो यू कि देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज. द कॉमन वन, ऑल्दो कॉमन वन आपके लिए है कौन सा वाला, इसको छोड़ दीजिए, फॉरगेट दिस वन. ओके, लुक एट दिस हेक्साडेंटेट. दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इन द लैब अ लॉट. ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड ऑल ऑफ दैट के लिए. मे बी यू विल डू दैट इन फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन. Do you have these kind of experiments, do you think? EDTA? EDTA, look at that. Raghav and Vaishnavi going EDTA right away. Absolutely. Do you know, by the way, first year medicine के lab में क्या करते हैं, क्या नहीं करते? Is there chemistry at all in first year medicine? Let me know, guys. I mean, it's a nice thing, right? To have an idea about कि ठीक है, जिस एग्जाम की आप लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को देखने के बाद लाइफ कैसी होगी? How is medical college life going to be like? What are the kind of subjects that you have in first year? खैर, I have a feeling that this lab does exist. And you use it to find hardness of water and all of that. ठीक है, cool. Anyway, yeah, sure, exactly, biochemistry like. This is more of environmental chemistry though, not biochemistry. ठीक है, okay, let's do a quick question. अब सब लोग तुरंत उठ जाएंगे, right? Coordination number of nickel in NiC2O4 whole thrice 4 minus is what? 4 minus. Coordination number? हाँ, क्या पूछ रहा है सवाल? What do you think this is going to be? Can you try this question out, my good friends? हाँ? Coordination number of nickel in NiC2O4 3 4 minus. ये बहुत अजीब सा लग रहा है. 4 minus ये तो नेगेटिव चार्ज है. हाँ ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इट्स एन आयन. दैट्स ओके. और देखो AIPMT का सवाल है. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इज निकल एक्सेप्टिंग. ओके, इन थ्योरी. So what do you see here? Oxalate C2O4 2 minus. आप लोग क्या बोल रहे हो? लेट मी जस्ट सी क्विकली. ए. अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं ए. ओके, ठीक है. 3 लोग बोल रहे हैं. दीपान्विता, वैष्णवी, तीर्थराज जी, राघव, राजपूत, नव्या आर ऑल सेइंग 3. आर यू श्योर अबाउट 3? ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? C2O4 अभी बनाया था मैंने स्ट्रक्चर. माइनस मतलब एक में ही हो जाएंगे 2 और ऐसे हैं 3, यानी कि होने चाहिए 6. यस, एग्जैक्टली तीर्थराज. देवांशी, राजन्या जी, 4 कैसे, मैं समझा नहीं. यू हैव वन ऑफ दिस टाइम्स 3, राइट? सो निकल will be surrounded by 3 of these and hence will get 6 lone pairs of electrons. आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है लाइफ में. So the answer should be 6. Yeah, don't worry about this 4 minus right now. उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल लॉस पूछा है. यस, गुड. एनसीईआरटी में पढ़ रहा था. अरे वाह तीर्थराज, ये बहुत अच्छा काम किया. तीर्थराज जी से सीखिए और एनसीईआरटी पढ़िए. दैट्स अ वेरी गुड हैबिट. एक और सवाल, चलो लेट्स ट्राई. इट्स ओके. 1 minute 3, sorry, blur. It's okay. The sum of coordination number and oxidation number of the metal M in the complex MEn whole twice C2O4 Cl, where En is ethylene diamine, is what? Okay. Try karo. You want to try this out? You've got to sum up coordination number and oxidation number. Oxidation number कैसे निकालते हैं? आपने redox reactions देखे थे, right? अगर नहीं देखे थे तो okay, I'll tell you right now, but बहुत डायरेक्ट है. कोऑर्डिनेशन नंबर तो इन दोनों से निकल जाएगा. ओके, एंड ये जो चार्ज है, जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, आई नो आई हैवंट टोल्ड यू दैट इज कॉल्ड, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन स्फीयर, राइट? इतने समय पहले हुआ तो पहला सेशन, मैं खुद भी भूल गया क्या हमने पढ़ाया था, बट वी हैव डेफिनेटली डन दिस. आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड ऑल दैट, राइट? तो आयोनाइजेशन स्फीयर से पता चलता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. व्हाट्स हैपनिंग? लॉट ऑफ यू आर सेइंग डी. दीपान्विता, तीर्थराज, राघव एंड बेस्ट नीट हेल्पर, वाह क्या नाम है आपका, वैष्णवी, ऑल ऑफ यू आर सेइंग डी. चलिए देखते हैं हाउ यू गाइस अराइव्ड एट दैट. देखो,
ऑक्सलेट इज डेफिनेटली अ बाइडेंटेट लिगेंड, वो अभी हमने देखा. एंड एथिलीन डायमीन इज ऑल्सो बाइडेंटेट, उसमें है 2 नाइट्रोजन एटम्स. सो टोटली यहां पे कितने होंगे? और बाय द वे ऑक्सलेट का चार्ज भी -2 है, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट. चार्ज -2 है और एथिलीन डायमीन का कोई चार्ज नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल लिगैंड. सो आई हैव गॉट कोऑर्डिनेशन नंबर टू बी इक्वल टू 6. बट व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर? Using that whole concept of redox, you will do -2 from one oxalate. Okay, from one oxalate you get -2 plus m whatever the metal is equal to 1. क्यों? क्योंकि क्लोराइड का है -1, तो उसको काउंटर करने के लिए ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसका होना चाहिए +1 चार्ज. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. सो m must be equal to 3 and excellent work everyone on figuring that out. So 3 and +6 हो गया आपका 9. Excellent work, excellent work. Yes, 3 plus 6. Yes, yes, yes. You guys are on fire. एक और सवाल करते हैं. The coordination number and oxidation state of chromium in K3Cr oxalate whole thrice is what? अब आप बोल रहे हो नहीं ऑक्सलेट नहीं कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं. Don't worry. Give me 15 more minutes and we'll do that. We'll do what it's called. So नाम तो बदलते हैं. It's all right, Ajay Meena ji, आप तो पहले आ गए थे. You were there before time. It's all right. Good evening. Hey, but let me. You are in the JE channel, right, Ajay Meena? I'm just maybe I've got things mixed up. Deepanvita is saying C. It's okay. JE NEET पढ़ाई तो सेम ही है, एग्जाम दो अलग अलग है. हम सेम ही चीज पढ़ सकते हैं साथ में, ठीक है. इफ यू वांट टू अटेंड दो सेशंस, मैं संडे को वहां पे और करने वाला ऑन थर्मोडायनेमिक्स. खैर, let's continue doing this. C. Deepanvita, best helper, Ajay Meena, Teesraj and Raghav Rajput are all saying C. मतलब लगता है C होगा, सब लोग बोल रहे हैं. तो चलो क्विकली लिख लेते हैं फॉर द फोक्स हु आर वाचिंग दिस नॉट लाइव, राइट. बाइडेंटेट है ये लिगैंड, चार्ज है -2. ओके, सो अगर बाइडेंटेट है तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, दैट इज डायरेक्ट. एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए -2 × 3 प्लस Cr इज इक्वल टू 3, क्योंकि K है 3, K प्लस मतलब कि 3 प्लस चार्ज होगा इसका. काउंटर आयन को अगर 3 माइनस, राइट, इधर होगा -3. अच्छा, माइनस लिखना मैं भूल गया, ठीक है. तो खैर Cr इज गोइंग टू बी इक्वल टू -3 + 6 व्हिच इज इक्वल टू +3. ओके, सो +3 दो जगह है बट 6 तो एक ही जगह है, तो C मस्ट बी द आंसर. एक्सीलेंट वर्क. सी सिंपल क्वेश्चंस, या इजी मार्क्स ऑल अराउंड. यस देवांशी, एब्सोल्युटली राइट, इजी मार्क्स. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन another idea, ठीक है, something called a flexi-dentate ligand. इस चीज को अगेन ये इज नॉट टेस्टेड. आई विल बी लाइक वेरी अपफ्रंट विद यू. कोई नहीं पूछता आपको फ्लेक्सी-डेंटेट क्या है. इन दोनों चीजों पे सवाल शायद आ सकते हैं, ठीक है, बट एनीवे वी विल जस्ट गो ओवर इट क्विकली. फ्लेक्सी-डेंटेट ये है कि इसके पास साइड्स हैं एक से ज्यादा, ओके, बट sometimes it decides to use one side, another time it decides to use both sides or stuff like that. Okay, so S2O32 minus and acetate ion, nitrite ion and SO42 minus, etc. have sides. Let's take an example of SO42 minus. It's a didentate ligand and at times it can also be a monodentate ligand. मैंने काफी ढूंढा कि किस सिनेरियो में ये होता है वो होता है, but this not your syllabus at all. NCERT में शब्द है ही नहीं. Flexi-dentate is not there in NCERT, so let's forget about it. But just थोड़ा सा insight as to okay, what is flexi-dentate? This one though, the next one is very interesting. Ambidentate. Ambi मतलब ambidextrous मतलब दोनों हाथ से जो चीजें कर सकते हैं, राइट. यू प्ले टेनिस विद वन हैंड, यू कैन प्ले टेनिस विद द अदर हैंड. कुछ लोग दो हाथ से लिख भी सकते हैं. Ambidentate is similar to that. Okay, what does it mean? Usually you have two different sides, okay, two different donor atoms या sides, and either of the two ligates or donates the complex. You know which ones? कोई examples बताओगे आप? Correct? Okay, good. I like the party hats. Yeah, let's get the party started. Friday evening. मजा आ गया? All right. So, look at this. Nitrite. अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं on practical chemistry, then you'll know there's a इतना मैं ज्ञान दे रहा था और उल्टा लिख दिया. यही बोल रहा था मैं, दिमाग में कुछ और था. Nitrite is different from nitrate, ठीक है, और दोनों का जो है सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट भी अलग अलग होते हैं. खैर एनीवे, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्राइट, NO2 माइनस, ठीक है. तो यहां पे या तो नाइट्रोजन से या तो फिर ऑक्सीजन से मेटल के साथ हो सकता है लिगैंड और मेटल का रिश्ता. एंड दिस इज द रिश्ता. आई सेड दैट. या लेट्स जस्ट स्टिक टू इंग्लिश, ठीक है. कुछ चीजें आई थिंक मेरे हिंदी इज रियली बैड एंड आई जस्ट स्टिक टू इंग्लिश. बैंगलोर में रहा हूं यार, आई नो आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, बट इतनी हिंदी आती है, ठीक है, एक लेवल तक ही आती है. खैर, साइनाइड, राइट, साइनाइड कैन हैव it's go at from the carbon atom or from the nitrogen atom. So
naming wise, you have an idea maybe about this. This is would be cyanide and this is isocyanide, right? अगर आपने organic थोड़ी बहुत की है, you know that Cn minus and Nc minus में यही फर्क है, ठीक है? मतलब कि बॉन्ड होता है इसके साथ या फिर इसके साथ, या AgCN Ag, ये मैंने किया था when we did DNF block. आपको थोड़ा सा याद आ रहा है? DNF block नहीं, इसमें किया था, हाँ हाँ उसी में किया था, I think DNF block में किया था, और it was in haloalkanes. It was in haloalkanes. It was in haloalkanes. We did this in haloalkanes. Yeah. नाइट्रो और AG के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है, और नीट में लास्ट 2023 में सवाल पूछा भी गया था. खैर, एनीवे, मे बी इसका आपको आइडिया होगा कि some sort of isomerism is shown over here. And in this case, if you're not familiar, don't worry. We will do that quickly. Another one is, the next type is called the chelating ligand. A chelate is this box-like structure. It's pretty cool. It's pretty cool. AgCN. Yes, CN. Cool. Chelate is this box-like structure. So to make a box-like structure, usually things that have more than two sides, ligands that have more than two sides usually form a box-like structure. Okay, that's what this is saying over. Two or more donor atoms simultaneously bind to the single metal ion and forms a ring like a cage. ठीक है, तो इसको बोलते हैं chelating ligand, and this is called a chelate complex. This process, unironically, is known as chelation. Look at this, it's beautiful but also a little scary. DMG. Now what is DMG? Dimethyl glyoxime. ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरी स्पेलिंग बहुत माशाल्लाह है. But yeah, and it shows you some sort of a this thing. There is another slide here, I think. हाँ, मैंने skip कर दी थी, but ठीक है. This is also what it looks like. Okay. खैर, you don't need to know these structures per se, so it's all right. ठीक है, this is, but it's in your syllabus that chelating में एक example है. EDTA can also form this. So most polydentate ligands are examples of chelating ligands, and they form chelate complexes. चलो, let's classify ligands now. कोई doubt नहीं है, right? Just checking. Everyone's all right. कहानी ही चल रही है. A lot of coordination chemistry is कहानी ही, और कहानी सुनते सुनते ही हमारे questions भी हो जाएंगे. That's how it's going to be. Yeah, we are doing okay. Oh, all right. Yeah, Ajay, Meena, it's all right. That theory is the same, right? Whether you do NEET or JEE, the theory is the same. Okay, nice, NEET helper. Based on bonding interactions between ligand and central atom. What do you mean by based on bonding interactions? Okay, now ये वाली चीज हम लोग later session में और explore करेंगे. The first one is easy, classical ligand. What is a non-classical ligand? We'll look at it. Classical ligand क्या है कि देखो भाई, हमको चाहिए electrons, it's the metal. And the ligand is like, हमारे पास है electrons. And they're like, it's a mutual beneficial relationship. So that's it. They donate one lone pair and that's it. Like, yeah, what are you talking about? ये तो, that's what will happen in every ligand and every metal, right? इसमें नया क्या है? नया अभी कुछ नहीं है. But this is how the process actually happens, right? Well, this is how it's theorized to happen. I cannot say for sure this is how it happens, but yeah, this is the theory. This is one of the theories. कि देखो, मेटल है भाई साहब, जिसमें साथ है, जिसके पास है empty d orbitals, और आपके पास आ रहे हैं, well, some sort of a ligand, a Lewis base per se. Lewis base मतलब electrons के साथ okay, so there you go, and there you get a bond formation. So what you get is a molecular orbital and a sigma bond. तो याद आ रहा है, molecular orbital, sigma bond. Yeah, chemical bonding में किया है ना ये सब. Don't worry, we'll continue chemical bonding next session में on Tuesday, and we'll do this in detail about what is sigma bond and all of that. But yeah, this is a classical way of doing it. A non-classical ligand is like, you know what? I'll give you electrons, but I'll also take electrons from you. It's both things. So that's a weird thing. That's really weird. Look at this. Hear me out. It donates. Yeah. Yeah, I like Star Wars. That was Star Wars music if you didn't catch that. Donate lone pair, and you get an electron cloud from the central metal ion in their low-lying weakened orbitals. This sounds so weird. इसका मतलब क्या है? Donates lone pairs and accepts an electron cloud from the central metal atom. Look at this. Carbonate, Cn minus, C2H2 and NO. ये सब बहुत छोटे-छोटे ligands हैं. Okay? And they have, well, low energy orbitals that are like, ठीक है, we can maybe come to some sort of a conclusion, and ये ligand ले लो. I'm sorry, hold on. That's how it will reform, right? These go there, and these electrons, maybe single electrons or double electrons, can go in over here. ठीक है? This is called as back bonding, and हम लोग इसको detail में करेंगे later. But
ये theory थोड़ी सी shaky है. I'll be very straight with you, right? If you look it up, if you go on sites like ChemStack Exchange and look up कि does this really still work, they'll be like, not really, boss. ये चीजें discard हो चुकी हैं. Okay, there are other ways of studying कि carbonate और cyanide में कैसे bonding होते हैं. Maybe this is not the best explanation. So it is highly unlikely कि NEET या फिर JEE इस चीज को test करेगा about back bonding. I'm being very upfront with you. ठीक है? But yeah, we'll still teach it because it's being taught for now. वो हम लोग बाद में करेंगे. Let's start with nomenclature. Exactly 10 मिनट बाद, as I mentioned. ऐसे 15-10 मिनट ही बात हो गया. चलो, okay. Let's start naming mononuclear coordination compounds. Mononuclear मतलब देखते हैं. एक metal atom है. ठीक है. The names of coordination compounds are derived by these principles. पहला बात, the cation is named first, both positively and negatively charged coordination entities. देखो, I've got X plus and Y minus. तो पहले आप नामकरण करेंगे इसका, ओके, फिर करेंगे इसका. Yeah, you can have negatively charged coordination entities as well, right? That's possible. We've done that in the first section. याद नहीं है तो थोड़ा देख लेना. ठीक है. Okay. You name them in alphabetical order. This is very similar to IUPAC जो आप लोग कर रहे थे organic chemistry में. Okay. And if there are a lot of prefixes like di, tri, उसके आप you don't not care about. ये सब ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा हम लोग को we don't have to discuss this too much, right? You are familiar with this? IUPAC तो आपने किया होगा 11th grade में organic में. Is okay? Cation सबसे पहले. Yeah, Tirthraj, absolutely, absolutely. So let's look at different kind of ligands: anionic, neutral, and cationic. I know cation का नाम लोग पहले बनाते हैं, but naming anionic ligands, this is different. Okay, I'm not talking about this anymore. ये तो पहले ही करना है. मैं ligand की बात कर रहा हूं. M and L whatever, right? So L अगर ligand negative है, उसकी बात कर रहा हूं. इसकी बात नहीं कर रहा. I'm not talking about this right now. खैर, I'm talking about the ligand. So negatively charged ligands का नाम कैसे रखा जाए, नामकरण कैसे किया जाए? If it ends with E, you make it end with O. Okay. So nitrate becomes nitrato. Carbonate becomes carbonato. Now this just sound like some Italian thing, right? Carbonato or acetato or whatever. I hope that was racist. But anyway, cool. Yeah. These are names. I'll give you this. इसका मैं slides आपको दे दूंगा on Telegram. You have to remember it. Well, you have to remember it. You have to write these down right now. Okay. But you must have an idea. इसको याद भी रखने की चीज नहीं है. Just have an idea कि अगर ITE, ये rule याद रखिए. Okay. अगर ATE से खत्म होता है तो you change it with ATO. That's the rule number 1. Let's just say the first rule of Fight Club and all of that. Right. Okay. Sulfato. Absolutely. Cool, cool, cool. That's great. If it ends with ite, then it becomes ITO. Okay. It's as well as sulfito, sulfite is sulfito, nitrite is nitrito. This one's interesting. This is the one that shows this funky thing. Yeah, do. Behropia hai. It has two ways of doing things. Chlorito, etc., etc., etc. ठीक है. अगला, shall we move on? Okay. If it's IDE, it becomes IDO. It just seems like कि जो भी E में बन रहा है वो O हो जा रहा है. That's what's happening. Fluorido, chlorido, bromido, iodo. अच्छा, by the way, एक बात बताओ. इसमें नंबर क्या होगा? What do you think the order would be here? I think, and correct me if I'm getting this incorrect, 1, 2, 3 and 4 because alphabetical, right? अगर ये चारों, अगर किसी चीज में ये चारों होंगे तो you just have to do alphabetical order. So alphabetical order. ठीक है. Di, tri does not count in this. Okay, not in alphabetical order. ये does not, ये फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. All right, sweet. Here are all of them. Some more of them. Some more of them. ठीक है. एम्बिडेंटेट की बात करते हैं. कोई डाउट्स नहीं है ना अभी तक? यू वांट मी रिपीट एनीथिंग? 3 रूल्स थे. या 8 आइड एंड आइड. Let me write that down. 8 आइड and आइड became ATO, became ITO, became IDO. ठीक है. That's all. Ambidentate ligands. This is interesting. देखो, cyanide and isocyanide, right? That's all. Cyanido, isocyanide, or cyanido C, cyanido N. This one is a little annoying. Nitrito N, nitrito O, और nitro जब बोल रहे हो तो NO2 है, और nitrito अगर सिर्फ बोल रहे हो तो ONO है. ये वाला थोड़ा annoying. I'll be like very straight with you. ठीक है. And because you think कि यार nitro या nitrito, what is NO2, right? और ONO क्या है? Because nitrito N is supposed to be,
bonding with N nitrate O is bonding with O. NCERT में दिया हो यार, इसलिए आपको बताना पड़ेगा. This one is a little annoying. Make sure you make flashcards about this. Similarly, thiocyanate, S डाल दिया तो thiocyanate हो गया, isothiocyanate हो गया, OCN and NCO is also there हो गया. Cool. We good? Only ligand, yeah, absolutely. Neutral ligands are a little bit easier. ज़्यादा ड्रामा नहीं है. Aqua is water. Amine with दो amine, like ammi, yeah, ammi से amine. Carbonyl, nitrosyl. हाँ, एक second. Nitrosyl acetamide. Did we have a NO minus? No, we did not. We had a NO2, right? NO minus नहीं, thankful. अच्छा, NO plus है ना? Cationic ligands हैं. ये nitrosyl is non-charged. Okay, just keep an eye out for this one. This is also something that कभी-कभी stumps students. ठीक है? Nitrosyl is NO. ठीक है? और बाकी सब देखो बहुत ढेर सारे रखे, देख लो. It's okay. Pyridine and all that. It's okay. PY is usually what pyridine is written at. इन सब के short forms हैं. बाद में देख लेना. All chill. ठीक है? Cationic देखते हैं. देखो नाइट्रोसिलियम NO+. So how do you know कि एक कंपाउंड में NO है या NO+ है? Look at the valency. That's where the oxidation number comes in picture. इसमें सबसे difficult question could be something like that. Could be. Okay. Nitronium also है जहां पे NO2+ है. This second one is not going to be asked. Trust me on this. This is not going to be tested. Really not going to be tested. खैर, अगर बहुत ढेर सारे ligands हैं of the same kind, then prefix is used. मतलब कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, etc. Right? अगर you already नाम में already है डाई, ट्राई, like अगर नाम में है जैसे कि क्या बोलते हैं, like you had EN है, right? Ethylene diamine. EN was ethylene diamine. तो अगर you have two of ethylene diamine, then you use something like bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, heptakis. Here, let's take an example, right? This is ethylene diamine. उसमें already di नाम में है. It will be weird to say diethylene diamine. So is it bis ethylene diamine? मतलब दो है इसके, okay? And ये dimethylamine, bis methylamine, मतलब कि दो हैं of methylamine. Cool? We are good? Yeah? Lot of rules. अभी करेंगे सवाल. Don't worry. अभी करेंगे सवाल. सबसे जरूरी बात, यहाँ संधि समास नहीं है. Okay? Let me write that down. Is this यार मुझे हिंदी नहीं आती. पर anyway, when you join two words together in Hindi or in Sanskrit or any other language, you usually eat up a few vowels. We are not doing that here. Okay? We are not doing that here. So there's no deletion of vowels. There's no hyphen. Tetra, amine. You know, ami wala amine. And tetra. You've got both of them together. So NH3 whole 4 times is just this. No vowels, nothing, no hyphen. अगर पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, पूरा Y नेगेटिव और इसका नाम होगा एंड ATE से, तो यू विल रिप्लेस IUM, UM और इनम ऑफ द मेटल. मतलब कि एल्यूमिनियम विल बिकम एल्यूमिनेट. ओके, पोटेशियम नहीं होता है. एल्यूमिनियम विल बिकम एल्यूमिनेट, जिंक विल बिकम जिंकेट एटसेट्रा. हियर आर द एग्जांपल्स. एल्यूमिनियम, पहला वाला ही है. प्लैटिनम प्लैटिनेट, मोलिब्डेनम मोलिबेट, जिंक जिंकेट. बहुत रूल दोगे, थोड़े सवाल कर लें. सवाल कहाँ है भाई? सवाल कहाँ है? 2-3 रूल और है, फिर सवाल है. डोंट वरी. ठीक है. निकल, निकलेट, कोवेलेट, फेरेट एंड मैंगनेट. सर विक्स ले लीजिए. विक्स की गोली लो. हाँ यार, you should have those ads that come up, right? You should get that. That's a good. Yeah. Bangalore weather. खैर, cationic neutral complexes के लिए नाम as it is रखते हो. Cobalt and platinum. ठीक है? Too many rules, right? We will revise these with questions. Don't worry. The oxidation state of the metal cation, anion या neutral entity में bracket में डाल दे Roman numerals में. This one's easy, right? You just put the number inside. This is what? This is the oxidation state or the secondary valency. Secondary valency मैं next session में पढ़ाऊंगा, but you know all this already, I'm pretty sure, right? Primary valency, secondary valency. This is primary valency, sorry, not secondary. This is a primary valency, which is the charge on the metal ion itself. अगर पानी है, पानी का भी नाम देना पड़ेगा. Look at this. Looks very scary, right? Look at this. पहला वाला नाम, full fledged नाम. देखो आ गया नाम. ध्यान से सुनो. Chromium 3. Chromium 3. 3 कैसे बताता हूं. Aqua 4. Tetra aqua. ठीक है. Florido 2. Dichlorido. ये हो गया तुम्हारा कैट आयन. इतना हो गया कैट आयन. फिर क्लोराइड. अब क्लोराइड एक है कि क्लोरीन एक है कि दो है कि तीन है, डजंट मैटर. क्लोराइड रहेगा. ठीक है. यू विल नॉट काउंट द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स. यू विल नॉट काउंट आयोनाइजेशन स्टेट बात करते हैं.
डाइहाइड्रेट। अब ये क्रोमियम 3 कैसे आया? यू नो दिस राइट? क्रोमियम, ये तो चार्ज नहीं है, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, तो क्रोमियम आई, ये क्या हो गया भाई? हाँ, इज इक्वल टू 3, हेंस आई पुट क्रोमियम एंड 3। कोई डाउट है? आर वी गुड हियर? सबसे बड़ा नाम, अरे दिस इज लाइक standard, I guess. It's like, yeah, it's okay. Mid, as you guys say, it's mid. Redox, Redox. अरे दूसरा फोन हमारा कहाँ गया जिसपे आपके कमेंट्स दिखते थे? चेक वेदर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नॉट। एनीवे, ठीक है, कूल, दिस इज फाइन। एनी डाउट्स? इजी? ओके, इजी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। देयर इज नो स्पेस दैट्स लेफ्ट बिटवीन द नेम एंड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका नाम बताओ क्या होगा? ट्राई करो। सवाल हो गया शुरू, रामबाण से भी बड़ा नाम। रामबाण, there was a fight between Lord Vishnu and Lord Shiva, Lord Krishna and Lord Shiva, I think, long back, because of some Banasur. Baan se naam yaad aaya. So the winning shot, try and name this. I'm giving you a random story until you try and name this. The winning shot was basically, I think Lord Shiva used a weapon of heat, and Lord Krishna used the weapon of it was cold, and it kept going on and on and on. And finally, the last one that won the war was Lord Krishna saying, I'm going to shoot an arrow that makes everybody go to sleep. And everybody started yawning and the battle ended. I'm not making this up. It's funky, right? it's hilarious. But anyway, इसका नाम बताओ यार तुम लोग. Since you said Rambana, I don't know, I got distracted. Guys, आपने बताया आसान है. नाम क्या है इसका? Shall I help you with this? I'll help you with this. टेट्रा अमीन. सबसे आसान वाला पहले लिख देते हैं. ये है टेट्रा अमीन. ओ नहीं, 3 है, टेट्रा नहीं है. ट्राई अमीन, राइट? हाँ, और ये है ट्राई एक्वा, ओके, और ये है क्रोमियम. क्रोमियम को कैसा लिखेंगे? क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे ना. क्रोमेट होता अगर ये एनायन में होता, ये कैट आयन में है, ये दिस इज इनसाइड कैट आयन, सो प्लस होगा बाहर, सॉरी, है ना. तो सिर्फ क्रोमियम लिख सकते हैं हम लोग, मतलब वी कैन राइट द वर्ड, वी कैन राइट क्रोमियम डायरेक्टली. कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, बट क्रोमियम भी लिख देते हैं. ठीक है, कूल, छोटा ही लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होता कि. ओके, और क्या बचा? क्लोराइड. ये हो गया पूरा इसके अंदर, बाहर हो गया क्लोराइड, नीचे लिख देते हैं. सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. ट्राई अमीनो, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3, क्लोरीन. मुखर्जी साहब बहुत क्लोज, यू वेरी क्लोज. I would like to just change 2 things. Triamine, exactly what Mr. Biswas is saying. Rajanya, I'm sorry, with what Biswas ji is saying. Triamine, triaqua, chromium 3 chloride. Beautiful, excellent. Loving the effort here by both of you, Rajanya and Tirthraj. Great stuff. You're excellent students. Absolutely right. ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा तीर्थराज जी, but you're on the right track. You're on the right track. Yes, Vaishnavi, triamine, triaqua, chromium 3 chloride. Oh yeah, Miss Janet, that's too much, man. I mean, I'm online, guys. Give me a pass on that one. Yeah, I have no way of knowing, but cool. I'm just gonna call you Rajanya ji, if that's all right. Where is this coming from? There's something there's like at the bottom of like my. Like this small thing there. Oh, that's the green screen being weird behind me. I was like, what's that? Wait, hold on, let me fix it. No, I don't think I can. Never mind. Okay, we'll have to live with that. All right. So all of you were great. This was the right answer. Triamine, triaqua, chromium 3 chloride. Let's look at the next question. Excellent work, everybody. CO. Oh, मतलब cobalt. ठीक है, cobalt है. Okay. Oh, this one's looking interesting. You got something here. What is this? This looks a little scary, doesn't it? Try करो. इसका क्या होगा IUPAC name? Try it out. What's the IUPAC name of this one going to be? That's just the fan making the green screen move a little bit. That's what's happening. I can't fix that from here unless I get off. There's like, जैसे गाय को खूंटे से बांधा होता है, so that's my, this is, you can see this is the wire that I'm kind of stuck with. Can't go till there and move it right now, but I will do it before the next session starts. Can you guys try this question out? IUPAC name of this? Shall I help you with this a little bit? Okay, so this is an ethyl compound, right? Ethane. Let's just call it ethane. Like, oh, let's say eth, right? That's the what do you call it? The backbone, right? That's the carbon backbone. Eth, 2 carbon atoms.
And there are two amine groups here. Okay, so let me say diamine over here. I'm helping you out. अगर तब तक कोई और कर सकता है, please go ahead and put it in the chat. Diamine something with eth. Okay, okay. Eth, diamine. Okay. कितने हैं? 1 and 2. Positions are 1 and 2. So I think let's put that here. It'll be ethane 1, 2. Am I in the right direction? Please tell me. 1, 2 diamine. Is that correct? What do you guys think? इस चीज के लिए ठीक है? Is that okay? And since there are 3 of these, I would say tris. I will not say tri because इसके अंदर already है diamine. If the name already has di or tri, then I will use bis, tris, tetrakis, pentakis and all of that. Right? Right? Okay? All right. And cobalt will be as is. Cobalt, bhai sahab, bending, but it will not become cobaltate. It will be cobalt because this is again a plus cation. And फिर आ जाएगा sulfate. ठीक है, so let's put all of it together. Tris, ethane, 1, 2 diamine, cobalt, 3 sulfate. अरे 3 ये तो हम भूल गए. 3 कैसे होगा? Is 3 correct? Can you just cross check that? Cobalt. This is not charged. This is not charged. Okay, we can call it neutral, but all right, not charged. Now cobalt plus nothing else. Okay, times 2 cobalt is going to be equal to 3 into minus 2, right? Because this is sulfate and there are 3 of them. Each sulfate has minus 2. So clearly cobalt is going to be equal to 3. Bas khatam. It's not going to be equal to. This plus this will be equal to 0. So cobalt must have a 3 charge. Okay? Cool? Oh wow. These Raj. Tris, diamino, ethane, 1, 2, cobalt 3 sulfate. Rajanya going one step further and saying tris, ethyl, ethylene, diamine, cobalt 3 sulfate. ठीक है. So let me write down what you guys have said. वो कैसा दिखेगा? ठीक है. तीसरा जी, you're saying tris, diamino, ethane 1, 2, right? It should. ये मैंने थोड़ा scam तरीके से देखा. I just wrote the things separately. You know that if you're going to name just this thing, it will be ethane 1, 2 and then diamine, right? Ethane 1, 2 diamine. It will not be ethane 1, 2 diamino pehle nahi hoga. Because if you're saying diamino, that means it's outside of the bracket. Okay, if you're saying diamino, whatever, I'm not sure if a thing like diamino exists, but if it did, then it would be this, right? Diamino would, agar aap O dal de rahe ho, that means it's a ligand by itself, but it's not. वो पूरी चीज एक ligand है. ठीक है? Okay? The whole thing is a ligand. So yeah, a little bit hard on this one. Cobalt 3 में Roman numeral डालो आप लोग. Tris, ethylene, diamine, cobalt 3 sulfate. Okay. Why are we saying ethylene, by the way? Deepanvita. Okay, great. Thank you for the input. Deepanvita, Rajanya, and Tees Raj. That hostile comment in polymers intro. Logesh, bro. Oh my God. That's my room. That's the room I'm taking the session from right now. Huh. You heard that, huh? I thought no one will catch that. That's very interesting. Yeah, that's the polymers intro video we shot in this room. He's talking about the Aakash BYJU'S video. There are 2 guys. Anyway, let's. Logesh, man. Okay. Tris, diamine, ethane, 1, 2, cobalt 3 sulfate. Okay. ठीक है. थोड़ा सा मुश्किल था ये वाला. Yeah. Diamine would mean again NH3 whole twice. If you put it, AMMINE, if you do that, it will mean this. But this is a compound in itself, not a compound. Let's say it's a ligand in itself. Okay. NH3 whole twice would be diamine. You're right. Okay. So, thoda sa mushkil. Nothing, they're not going to get this hard in NEET, but don't worry about it. For coordination complexes, we don't talk about the number of cations and anions in the ionization sphere. Okay? We don't talk about that. Try, Devanshi. Okay, great. Thanks for trying. Ethylene, diamine, cobalt 1. Cobalt 3 hoga, not 1. It wasn't that hard? Okay, cool. Great. Yeah, but since I did not give you the name, मैंने आपको नहीं दिया था, right? In the list of things that I gave you, I didn't spend too much time on each of those names, and I gave you a name. So unless you know the name of that species, it's difficult to name it. That was one of the examples जहाँ पे we use both IUPAC nomenclature from organic as well as this. Anyway,
How about this one? Try this out. This one is also a little tricky, but ये आप लोग कर सकते हो. This you can do without any help. Okay. The small hint that I want to give you is इस तरफ होगा आपका argentate and in bracket whatever उसका charge हुआ. Here it will simply be silver, not argentate. It will just be silver and this. Why? Because this is the plus and this is the negative ion. Try करो, ये वाला try करो. Devanshi, it's all right. Good try, good try. Don't worry about it. Try करने की जरूरत नहीं है. We're all learning here, right? Try this one out, guys. The only way to figure out the whole of nomenclature is by practice. है ना? हम लोग करते हैं practice साथ में. So here the diamine thing will work. अरे, this is exactly that, right? So हो जाएगा भाई diamine. Di थोड़ा नीचे लिखते हैं. ऊपर तो आ जाएगा आंसर. Diamine is definitely there. Okay, and also argentate या silver. इधर होगा silver. Let's put silver here. But silver what? Silver what? Things get interesting. I don't know यार. इसमें क्या होगा मालूम नहीं. Because this is not charged. Right? So इसका charge will be based on what this इसका charge is. So let's figure out इसका क्या होगा. ठीक है. This is cyanide. दो है cyanide. Okay. इसका charge क्या होगा? Let's find out. Cn. This is like which came first, right? The chicken or the hen. Cn minus का charge है -1. So 2 into -1 plus Ag is equal to some negative charge. Negative, let's say y. And silver is equal to plus x because इसका तो charge नहीं है. Charge कैसे करें भाई? Di aqua. राजन्या भाई साहब, aqua कहां से आ गया? ये तो अमीन होगा ना? Close enough. Dicyanide argentate. I love it. Rajanya, quick. Very quick. Very quick. But I think in your hurry, you have just named the first thing thoda sa ajeeb, but otherwise they're also good. Rajanya, Tirthraj also, I think, absolutely right. Tirthraj is doing a good job. You got it bang on, I think. Vaishnavi, yes. But don't write the number 1, okay? It's Roman numerals, guys. Deepanvita also on right on the money there. Oh, Deepanvita, it's not 2, it's 1. Everyone being so close. Autocorrect? How did Amin get autocorrect to aqua? Ah, nice one. You guys are funny. Amin got autocorrect to aqua. Huh? Sahi hai, I like it. Blame the technology. Beautiful. Yeah. Brain mein autocorrect ho gaya hai na? Anyway, so here is the small thing about periodic table that will help you here. Yeah. Silver ka charge hoga +1. That makes life very easy. If you make this +1, then iska charge hoga -1. Correct? And if you make this +1, this gets sorted here too. So the answer would be diamine silver 1, Roman numerals, dicyanide argentate 1. Cool? Autocorrect. I'm going to use that. Instead of saying Freudian slip, I'm going to say autocorrect ho gaya dimag mein. Sahi hai. Let's go on to the next question, shall we? Maza aa raha hai yaar, pyar se karne mein. See, it's been 45 minutes and we have covered the whole of nomenclature practically. When have you ever done it so quickly? Right? Let's do this. Chalo. IUPAC name of CR F2 EN whole twice CL. ये है NEET 2013 का सवाल. Try करो. Now in this case, that's the most beautiful thing about NEET, right? You don't necessarily have to name the whole compound. Just figure out the rules और उन rules के help से you'll be able to name it with elimination. Especially in this, ये जो नाम naming वाले questions होते हैं ना, whether it is IUPAC regular वाला, whether ये वाला है coordination वाला, you can do it. How will you do this? Sure, Devanshi, anytime. Rajanya saying B. Excellent. Okay, Rajanya says B. All right. How do you get to B? Can you help us a little bit? I'm going to write your name here because I think वहाँ पे और चीजें आएंगी. Can you help us? Okay. Ajay Bhai Sahab also says this. I like it, huh? JEE वाले दोस्त भी आ रहे हैं NEET के वीडियोस देखने. You're fabulous students. Vaishnavi also saying B. Okay. Looks like B होगा answer. Mukherjee ji, I'm just going to write Mukherjee ji. Because it's slightly smaller than Tirthraj. I'm being lazy here. Okay, all right. Hello, I take offline Aakash coaching. That's cool. Diff. What is diff? Aarti. All right. Aarti. Also, everyone's going with hello.
Hello, is it me you're looking for? That's a song I like more than the Adele wala hello. I can see it in your eyes. And bis, right? That's the one that is the differentiating factor. I'm guessing that's what Rajan was saying. The correct, not autocorrect, but the correct IUPAC name for this, इसमें जो भी चीजें हैं क्रोमियम में कुछ हो जाए, बट बिस इज द वन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट. बिस की वजह से हम कुछ कर सकते हैं एलिमिनेट. देखो इसमें बिस नहीं है तो दिस गेट्स एलिमिनेटेड. ओके, फर्स्ट वे, ऑल ऑफ दीज थ्री हैव बिस इन इट. बिस बिस बिस. ओके, अगली चीज क्या है? ये फ्लोरीन बिकम्स फ्लोरिडो, है ना? फ्लोरीन बिकम्स फ्लोरिडो. सो अगेन आई विल एलिमिनेट जहां पे फ्लोरिडो नहीं हो. देखो ये हो गया फ्लोरो, और कहां है फ्लोरिडो इसमें? चलो इसको तुरंत हटा देते हैं. नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन बी एंड डी. बी एंड डी में तो सिंपल है, राइट? एथिलीन डायमीन एंड देन कम्स फ्लोरीन. तो अल्फाबेटिकली स्पीकिंग, वेल एथिलीन डायमीन विल कम पहले, है ना? तो ई बिफोर एफ, तो ये हो गया, घट गया, एंड हेंस आंसर हो गया बी. ऑल राइट, बी इज द राइट आंसर. ये माइक का कमाल है. अच्छा, माइक की आवाज अच्छी नहीं है, माइक बहुत प्यारा है. ठीक है, वी आर नॉट मेसिंग अराउंड विद क्लोराइड. नो वी आर नॉट. एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क. या, ऑल ऑफ यू आर ग्रेट. एम्स 2010 का सवाल, आयुपैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स Hg CO CNS होल 4 टाइम्स. बाप रे, वही चीज करो फिर से. एक हिंट दे दूं या ट्राई कर रहे हो? यू वांट ट्राई दिस आउट? आई विल गिव यू अ हिंट. आई एम शेमलेस. वी आर लर्निंग दिस टुगेदर. इफ दिस वाज अ टेस्ट, कोई होता नहीं हिंट देने के लिए, बट अभी हम लोग साथ में सीख रहे हैं. आपका सबसे बड़ा हिंट है, दिस इज एन एनायन. एनायन है तो मेटल का नाम कैसे खत्म होगा? विल इट बी कोबाल्ट और विल इट बी कोबाल्टेट? फिगर दैट आउट एंड योर बैटल इज लाइक 90% वन. या, सिल्वर वाला केम ऑन नीट 2022. राजन्या has been paying attention to NEET. You can't understand this chapter, Abhishek? अरे यार, तो पढ़ो, सब समझ आ जाएगा. Coordination is not that hard. I would understand if you said कि कोई और चीज है जिसमें बहुत फैंसी थियोरी है. This is just procedural, isn't it? Anyway, Abhishek, try and watch the videos. अगर नहीं समझ में आता है, ping me on Telegram. I teach Chem. I'll try and help you out. ठीक है? If you have doubts, there's also yeah, you guys chat with each other, solve each other doubts, look things up online. If you're not able to figure it out, I'm here anyway. Khair, hey Srishti, how's it going? Vaishnavi, Deepanvita, and Aarti have given me answered. So V, D, and Miss Aarti is going with D. Okay, and Rajanya also is going with A. Okay. All right. Hello, Srishti ji. Please try solving this question. Raj Mukherjee ji is saying A. You took my hint, didn't you? The ones who took my hint have got this answer correct. What was my hint? Dekho, this is an anion, right? Anion, this whole complex is anion. So it will form cobaltate, not form. IUPAC now हो cobaltate. अब देखो यार, हो गए eliminate तीनों. Yeah, look at that. They all got eliminated. All left is that guy right there. Yeah, there you go. That's the answer. Easy one. Yeah. Here's another one. बहुत सवाल हो गए. The IUPAC name of this guy. Wow. Yeah. ये वाला लग रहा है डरावना. No, it's not. Trust me. Use logic again. You'll be good. You'll be good. Try it out फिर से. Yeah, देवांशी, अजय, मीना, absolutely right. अभिषेक भाई पढ़िए, और क्या करेंगे? एनसीईआरटी पढ़िए या तो हमारे वीडियोस देखिए. दिस वाज सेशन नंबर 3. इसके बाद भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं साथ में. आई थिंक, ट्रस्ट मी गाइस, वी आर हियर जस्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम. द मेन थिंग यू हैव गॉट टू डू इज रीड द एनसीईआरटी. दैट्स योर बिगेस्ट गेन. आप उसको पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, सॉल्व क्वेश्चंस, एंड वील हेल्प यू आउट विद डूइंग थिंग्स क्विकली. टिप्स एंड ट्रिक्स, आई एम हियर फॉर दैट. अरे अजय भाई साहब, सवाल करिए. अनीता जी को करने जो कर रहे हैं. Yeah, Devanshi, good job. Ajay, you're right as well. Let's solve this question. कैसे करोगे इसको? It is as simple as identifying. इसमें क्या है? What is जो भी, there may be a lot of noise, but if you remove the noise, इसमें क्या है? You've got amine, you've got bromine. Well, amine, bromine, no, bromine. What is it? How do you look at it? भूल जाता. Bromo, हाँ. Amine, bromo, nitro, and then platinum, and then chlorido, right? तो इसके अल्फाबेट्स क्या है? प्लेटिनम हटा दो, अल्फाबेट्स लिखो, राइट? लेट्स डू दैट. अल्फाबेट्स लिखते हैं. ए, इसका बी, इसका सी और इसका एन. तो द ऑर्डर शुड बी दिस. दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ नेमिंग, राइट?
and ignore di, tri, etc. Okay, in alphabetical, in order में आप इसको ignore करो. Then if you do that, then you look at it, then life becomes so easy. Yes, you've got the hint. Yes, absolutely right, Srishti. Tirthraj, Ajay, Meena. Tirthraj, Ajay, Meena. Deepanvita and Preeti, what's up? Yes, everybody is going with, oh, see, Preeti ji is saying B. Okay, everybody else saying A. ठीक है, चलो हम लोग एक बार क्विकली अब लेट्स गो द ऑपोजिट ऑर्डर, राइट? देखो, एक के बाद में आ गया 4, डज नॉट वर्क. कौन सा 4? ये देखो, ये हम यही काउंटिंग कर रहे हैं. एक के बाद आ गया 3, नॉट करेक्ट, क्योंकि देखो अमीन के बाद आ गया क्लोरो, यहाँ पे अमीन के बाद आ गया नाइट्रो, नॉट करेक्ट. अमीन के बाद ब्रोमो, बट फिर आ गया नाइट्रो, नॉट करेक्ट, या बिकॉज आना चाहिए क्लोरिडो, राइट? सॉरी, नॉट क्लोरिडो, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरिडो होना चाहिए ना, क्लोरो है ये, है क्लोरो. दैट्स इंटरेस्टिंग. क्लोरो इज आल्सो करेक्ट, इज इट? ये हमको नहीं मालूम था. आई थॉट इट्स गोना बी फ्लोराइड, फ्लोरिडो, क्लोराइड, क्लोरिडो, बट क्लोरो यहाँ लिखा है. ठीक है, ओके, we'll take it, I suppose. Yeah, answer should be among these options should be A. अभिषेक जी, इट्स ओके, आई नो आप बोल रहे हैं कि आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप इसको पूरा ठीक से सुन लीजिए. मे बी यू जॉइन दिस सेशन आल्सो मिडवे ना, जस्ट स्टार्ट दिस सेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग और थोड़ा एनसीईआरटी पढ़िए, यू विल डू दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली. ठीक है, ये वाला इसका आंसर है ये. ओके, स्वीट, एक्सीलेंट वर्क. सो अभी लेट्स डू इट बैकवर्ड्स, उल्टा करते हैं. लेट्स गेट द नेम फ्रॉम द फॉर्मूला. सेंट्रल एटम पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिगैंड्स लिस्ट होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब नाम से हम लोग निकाल रहे हैं फॉर्मूला. द प्लेसमेंट डज नॉट मैटर. अभी तुम पहले क्लोरो करो, नाइट्रो करो, इट डजंट मैटर, नाम से आप लोग कर रहे हैं. पॉलीडेंटेट भी अल्फाबेटिकल होता है. अगर एब्रिविएटेड है तो पहला लेटर ऑफ द एब्रिविएशन फिगर आउट करेगा पोजीशन क्या होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. है एब्रिविएटेड EN, मतलब एथिलीन डायमीन में E is what takes preference, not DN. obviously that's all this saying. ठीक है, एंड अगर चार्ज और अनचार्ज है, वो पूरी चीज को आप एनक्लोज करिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में. अगर इसमें चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, अगर प्लस माइनस हो गया तो कैटायन एनायन होगा. कूल. सो और अगर पॉली एटॉमिक है देन उनके फॉर्मूला आप लोग कर देते हो ब्रैकेट्स में अंदर. आई एम गोइंग अ लिटिल क्विकली ओवर दीज रूल्स बिकॉज दीज आर जस्ट रूल्स. मैं इसको आपको और डिटेल में बता सकता हूं, बट इफ यू वांट मी टू आई कैन डू दैट, बट इट्स बेटर दैट यू प्रैक्टिस इट. ठीक है, we'll do questions right after this. Ligand abbreviations are also put in parentheses. Parentheses मतलब bracket. देखिए इससे हमारी इंग्लिश भी बेटर ही हो रही है. Parentheses, fancy words, right? Brackets, that's all it is, brackets. No space between ligands of the metal and the coordination sphere. So here is an example, right? आप इधर जो नंबर डालोगे, this is the charge of the whole. If you see, wait, yeah, right there, at that corner, yeah. I'm not sure about the space that I have here. Come space there, right to the corner. The charge of the cation or the anion is shown by this number. इसके साथ भी सवाल करते हैं. जब rules, as you go into the rules बार, things get a little hectic very quickly. So we'll do some examples and you'll figure it out. The charge of cation is balanced by the charge of anion. Obviously it's a neutral charge. Okay, so चलो, you've got this guy right here. ठीक है, ये है बड़ा सा नाम अजय. टाइम पास नहीं, टाइम पास हम करेंगे, not you. Here, maybe option problem, Rajanya. Okay, yeah, I think it should be chlorido. क्लोरो तो नहीं होना चाहिए था उसमें. Yeah. खैर, tell me the formula of this guys. ये तो आप लोग कर सकते हो, right? डाइक्लोरिडो मतलब है Cl2. बिस इथेन 1,2 डायमीन है ना, वही NH2 CH2 NH2. याद है क्या अभी किया था? बिस मतलब 2, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट, एंड क्लोराइड मतलब कितने क्लोरीन थे, कितने आदमी थे, दैट यू हैव टू फिगर आउट, राइट? सो कोबाल्ट प्लस -1 एंड कोबाल्ट का कितना है? 3 है. 3 प्लस -1 इज इक्वल टू x into -1. This x will give you the number of chlorine atoms. So यहाँ पे is equal to 2 is equal to minus, इधर हम लोग इक्वल टू नहीं करेंगे, बार बार हम गड़बड़ी कर देते हैं. This plus this should be equal to 0 because cation and anion का चार्ज होना चाहिए 0, right? So 2 minus कितने हैं? x times -1 is equal to 0. So x will be equal to 2.
राइट। सो ये होंगे आपके Cl2। अब आप पूरा इसको करो। Cl2 बट होल्ड ऑन, 2 क्लोर, अरे नहीं उल्टा हो गया भाई, इसको फिर से लिखते हैं, पूरा ठीक से लिखते हैं। आई नो यू गाइस राइटिंग समथिंग इन चैट, आई विल सी दैट, बट क्विकली फॉर द फोक्स हु आर नॉट रीडिंग द चैट एंड जस्ट वाचिंग दिस वीडियो, एक बार फिर से इस पूरा पार्ट कर देता हूं। कोबाल्ट प्लस 2 into Cl minus is going to be equal to the charge of the cation. Okay, now this is 3 and minus 2 which is equal to plus 1. ठीक है, तो मतलब anion का भी चार्ज होगा -1, so there's only one chlorine atom. Cool. So what do we have? What do we have? CO, En twice, Cl2 twice. Rajanya on fire. Absolutely right. Absolutely right. Yes, Tirthraj also doing really well. Great work. CO, Cl2, En whole twice Cl. Excellent work. Good work. Good work. Good work. Now ये order doesn't matter. ठीक है, it's okay. चलता है. ठीक है. Now here is another one. ये वाला try करो. Time is almost up. Session is also almost done. हो ही गया है. या आखिरी सवाल है. उसके बाद I'll give you some homework questions and we'll call it a day. अरे वैष्णवी, yes, absolutely right. For the last one, good work वैष्णवी. ये वाला can you guys try? Hexaamine chromium 3. Hexaamine chromium 3. Okay. कुछ चार्ज होगा इस पूरी चीज का, 3+ ही होगा, राइट, बिकॉज इसमें अमीन इज नॉट चार्ज। ओके ठीक है। हेक्सासाइनिडो Cn-6, माइनस तो नहीं लिखते ना, जस्ट Cn लिख देते हैं। हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट 3, कोबाल्टेट 3, इसका हो गया 3- है ना, बिकॉज देखो साइनाइड के चार्ज होंगे -1 into 6 मतलब -6 प्लस 3 फ्रॉम कोबाल्ट 3, मतलब इसका पूरा हो गया चार्ज -3। यही मैंने लिखा है 3- यहां पे। ठीक है, कूल। या पी लेंगे पानी, डोंट वरी। इसको सवाल ट्राई करो। सो दिस इज द होल कंपाउंड, राइट, कोबाल्ट एंड देन NH3 होल थ्राइस, एंड इसका चार्ज होगा 3+ एंड उसका काउंटर आयन का भी चार्ज होगा 3-, सो इट गेट कैंसिल्ड आउट ब्यूटीफुली एंड व्हाट यू गेट इज दिस नाइस एंड नीट कंपाउंड। दिस इज द आंसर। या एनी डाउट्स गाइस? Abhishek, ping me on I teach Chem. Yeah, we'll figure it out. जो भी, if you have any scenes in chemistry, on Telegram or on Discord. Cool. If you guys have any doubts, we can discuss them or we'll end the session here. बताइए, what's on your mind? Great work, Rajanya. Great work. Rajanya and Teethraj, the usual suspects, huh? I haven't seen you guys here on this channel before, but it's great. Better late than never. Excellent work. Excellent work. Yeah. You're getting the hang of this and that's really amazing. Rajanya, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. Do you see what Tirthraj wrote? Yes, Vaishnavi, you're doing all right? Okay, that's great. So, Rajanya, in the first one, you won't have that Cn6 in the cationic complex. Yeah? Anion वाले में रहेगा. Cool? That's the only small change you're going to have to make. What Tirthraj wrote. Okay? This is the answer right here. All right. चलो, I'll give you a few homework questions and these are for you to do in your free time, practice करने के लिए. I mean, if you literally look these up online, you'll probably get the answer. But it's okay. Try करो. I know you're going to be, ethical about it. You're going to be doctors after all, right? Ethics has to be in your DNA. Yeah, I made a joke, a bad dad joke. इन चारों के आप नाम लिखिए. Practice that. And here's a question from AIPMT 2002. Try करिए. Give me 5 minutes. We'll start the next session at 8:05, 8:10 में. ठीक है? I have another session with you, right? You also take a break, walk around, come back, and we'll continue. You did separate? अच्छा, all right. फिर मिलते हैं. Yeah? It's okay. गलती होती रहती है. Life is a learning experience. Yes, absolutely right, Dipanvita. Absolutely right. Good job. Good job. ठीक है. हम लोग मिलते हैं 5-10 मिनट में. दूसरा सेशन, इसका अगला वाला पार्ट यहीं पे होगा. Yeah? उसमें भी as usual we'll do questions, a lot of questions, and we'll keep doing this. ठीक है, चलो, I'll see you in 10 minutes. Take a break and I'll see you as well. अगर दूसरे चैट में लोग आते हैं उनको बता दो भाई पुराना सेशन थोड़ा टाइम अभी खत्म हुआ तो 5-10 मिनट दूसरा वाला आएगा. ठीक है, चलो, see you. This was awesome, man. I like teaching you guys. See you. Bye.